All right, so hi everyone, a very good evening to all of you, and welcome back once again to another class of PIB Current Affairs. In today's class, my dear friends, we are going to talk about the PIB news from 18th to 20th of April 2025. Before we begin, you need to give me a thumbs up so that I can start the class. Good evening, everyone. Please give me a thumbs up if everything is fine, if you can see me properly and can hear me properly. Then I'll start discussing the news today. And guys, 18 तारीख 18th April was Good Friday. That was holiday. 19th and 20th Saturday Sunday. तो इन द लास्ट 3 days बहुत कम न्यूज है, मतलब बिल्कुल ना के बराबर न्यूज है. तो एक ही जो न्यूज है वो उसमें एक्सप्लेनेशन चाहिए, बाकी क्वेश्चंस इन शॉर्ट ही हैं आज. बट टुडे क्योंकि न्यूज कम है, सो वी आर गोइंग टू डू अ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन. राइट, वी आर गोइंग टू डू अ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन. आई टेल यू how you should attempt a descriptive questions, what are the requirements for a descriptive answer. ठीक है, everything will be discussed. ठीक है, तो न्यूज कम है तो हम टाइम का यूटिलाइजेशन जरूर करेंगे. प्लीज गिव मी अ थम्स अप if everything is fine, if you can see me properly. Yes, I think I should start the class now and let's talk about the very first question for the day. और yes, आज मैं क्वेश्चन में जाने से पहले मैं सबसे पहले आई विल टॉक अबाउट द पीडीएफ ऑफ दिस क्लास एंड माय गवर्नमेंट स्कीम्स क्लास एज वेल. राइट, so my dear friends, the PDFs of this class, that is PIB, all the sessions and government scheme sessions are available on this channel, PIB by Manish Sir. Please search for it. If you are not able to find it, please DM me at Manish. I will be giving you the link for this particular channel. Okay, search in the Telegram, PIB by Manish Sir. You will find uh, this channel. And if you are unable to find it, please DM me at Manish. I will give you the link. Okay, question number 1. Ministry of Health and Family Welfare is implementing, and this ministry is headed by Mr. J.P. Nadda, who is also the Minister of Chemical and Fertilizers, is implementing the National Deworming Day program. Under this program, biannual mass deworming for children and adolescents aged 1 to 19 years is carried out on designated dates, which are. Okay, now you must be wondering suddenly why I am talking about the National Deworming Day, right? Why I am doing it. So remember, guys, the Ministry of Health and Family Welfare has provided the data regarding how India is fighting the anemia. Right? First of all, what is anemia? Anemia hota kya hai? Remember, anemia is a blood-related disorder. It is a blood-related disorder, first of all. Okay? Now, what kind of disorder is this? And it is caused majorly and primarily due to iron deficiency. Iron deficiency, which is primarily resulted from a deficiency of hemoglobin, right? Which is caused by the deficiency of hemoglobin in the blood. Okay? Now, what are the symptoms of anemia? So, fatigue is the very general symptom. Fatigue hota hai, shortness of breath, right? And it is a very common issue amongst all women and girls, women and adolescent girls in the country, right? And it is also caused due to some nutritional deficiencies like vitamin B12, vitamin A. इनकी deficiency से भी ये होता है, but primarily it is caused due to iron deficiency, right? Now, Ministry of Health and Family Welfare has said that anemia affects around 500 million women who are in the age group of 15 to 49 and 269 million children under 5 years, right? ये वर्ल्ड वाइड है, पूरे दुनिया की बात हो रही है. Approximately 30% of non-pregnant women had anemia in 2019, and in 2019, approximately 37% of all pregnant women were affected by anemia. ठीक है, तो चाहे प्रेग्नेंट वुमेन हो चाहे नॉन प्रेग्नेंट वुमेन हो, anemia is a major cause of concern amongst all the women like that. ठीक है. So what is the status of anemia in India as per NFHS 5, National Family Health Survey 5? Now, generally, I do not, I do not ask you to remember such data, but today I will ask you to remember this table because they have specifically provided. And even if they do not ask any objective question, you guys can use this data in your descriptive answers. कोई भी health related question होगा, so you can put this data there, right? So among the men in the age group of 15 to 49 years, the anemia rate is 25%. Women 15 to 49 years, 57%. So you can see the difference between the same age group, men and women, right? Same age group में आदमियों में कितना है 25%, बट महिलाओं में 57% anemia rate है, right?
Adolescent boys 31.1%, adolescent girls 59.1%, pregnant women 52.2%, and children below 5 years of age 67.1%. Just do remember these numbers, right? I would request you to remember these numbers. It will be good for you, my dear friends. Now, what government is doing for eliminating, for fighting the anemia? So I hope you remember that there is an Anemia Mukt Bharat program of the Ministry of Health and Family Welfare, which was launched in the year 2018 with a 6 by 6 by 6 strategy, right? 6 by 6 by 6 strategy, under which there are 6 interventions to reduce the prevalence of anemia. Now, there are 6 type of beneficiaries of Anemia Mukt Bharat, right? Who are children between the age of 6 and 59 months. अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, but you can easily have a look at these in your PDFs, right? Children between 5 and 9 years, women of reproductive age, adolescent between 10 and 19 years, pregnant women, and lactating women. These are the 6 types of beneficiaries of Anemia Mukt Bharat. And these are the 6 interventions and 6 institutional mechanisms to tackle the anemia under Anemia Mukt Bharat, right? What else government is doing? The government is the government is implementing the National Deworming Day program for eliminating the deworming. What is deworming? सिंपल शब्दों में समझे तो पेट में जो कीड़े हो जाते हैं, ठीक है, उसको हटाने के प्रोसेस को deworming कहते हैं, ठीक है. Now under this program, biannual mass deworming for children and adolescents who are in the age of 1 to 19 years is carried out on designated dates, which are 10th February and 10th of August. 10 फरवरी और 10 अगस्त को साल में 2 बार डिवॉर्मिंग, मास डिवॉर्मिंग कैंपेन चलाए जाते हैं बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, राइट. What else government is doing to eliminate anemia or to combat anemia? Intensified year-round behavior change communication campaign, testing and treatment of anemia through Anganwadi centers, through primary healthcare centers using digital methods and point of care treatment. And there are mandatory provisions of iron and folic acid fortified foods in government funded public health programs like ICDS हो गया, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जननी सुरक्षा योजना, ठीक है. In all these government funded public health programs, there is a mandatory provision of iron and folic acid, ठीक है. That's all about this news. So the right answer will be 10th February and 10th of August. 10th February and 10th of August, ठीक है. Okay, now let's talk about the questions in short. As I already told you, today there are very less news, but don't worry, we will utilize our time by discussing a descriptive question. Okay, question number 2 क्या है? Name the initiative launched by Institute of Liver and Biliary Sciences on the occasion of World Liver Day to spread awareness about keeping the liver healthy. World Liver Day is observed on 19th of April, right? And the theme for 2025 Liver Day is food is medicine. Food is medicine. Okay. The initiative launched by Institute of Liver and Biliary Sciences located in New Delhi is HEALD. Okay. HEALD is the name of initiative. India participated at Africa's largest tech and startup show, GTEx, which provides platform for discussing inclusive and equitable growth of the global economy. Where did GTEx take place? It took place in Morocco. And where in Morocco? Marrakesh. Where in Morocco? Marrakesh. Right? Anusandhan National Research Foundation has announced the selection of pair networks comprising 18 hub institutions and 106 partnering spokes under its pair program. The pair program aims to strengthen India's higher education and research ecosystem by nurturing innovation, building research capacity, and promoting excellence across regions. What does PAIR stand for? It stands for Partnership for Accelerated Innovation and Research. Partnership for Accelerated Innovation and Research is the right full form. In which state world's first and largest gigawatt scale integrated renewable energy project is located? This is very, very important. It is located in Pinnapuram near Kurnool. And I hope you know where Kurnool is. It is in Andhra Pradesh. India's world's first and largest gigawatt scale
इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट। इंटीग्रेटेड मतलब यहाँ पे हाइड्रो पावर भी है, सोलर पावर भी है और बायो एनर्जी पावर भी है। ओके, which among the following is set to become the first coal PSU in India to adopt wasteful technology for coal mining? It is Southeastern Coalfields Limited. Southeastern Coalfields Limited. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, the first ever Indian to visit the International Space Station and the first Indian astronaut to travel to space in over 4 decades after Rakesh Sharma. Right, he will be traveling to International Space Station in the next month, and through the mission which is called as Axiom Mission 4. Axiom Mission 4 is a private space flight. It is being operated by Axiom Space. Axiom Space in collaboration with SpaceX and NASA. SpaceX and NASA. तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो न्यूज जो थी वो इतनी ही थी आज की डेट में। ठीक है, इससे ज्यादा न्यूज थी नहीं थी। अब देखो, एक चीज मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, दैट आई ऑलवेज ब्रिंग ओनली द रेलेवेंट न्यूज विच आर रिक्वायर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। अब वैसे तो पीआईबी में अगर आप देखोगे तो दुनिया भर की न्यूज होती है कि ये वहां पे इन्होंने ये किया, ऐसा किया, ऐसा किया। दैट इज नॉट रेलेवेंट फॉर अस माय डियर फ्रेंड्स एट ऑल। ठीक है, वी have to only cover only that news which are relevant for us। और आई थिंक पिछले 5 साल से मैं पीआईबी पढ़ा रहा हूँ, पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने एक न्यूज और 6 क्वेश्चन इन शॉर्ट कराए हैं। बट डोंट वरी, लेट्स टॉक अबाउट दिस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। और मैं आपको बताऊंगा, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो बस 10 मिनट में इस क्वेश्चन को हम समझेंगे कि इस आंसर में, और इसका आंसर भी है मेरे पास, डोंट वरी। ठीक है, क्या करना होता है, कैसे करना होता है, राइट। और कोई भी अगर तुम्हें फालतू की न्यूज करा रहा है इधर उधर, भाई मत करो। ठीक है, अपना टाइम क्रूशियल, अपना जो क्रूशियल टाइम है वेस्ट मत करो। ठीक है, चलिए कहाँ गया भाई, यस। so what is the question? Let's read the question carefully. The Human Development Report 1997 has defined human development as the process of enlarging people's choices as well as raising the level of well-being achieved. Discuss. Now, before going to write the answer, you always have to brainstorm for 5 minutes about what all you are going to write in this particular answer. ठीक है, तो सबसे पहले you will have to identify the keywords. Right, the very first step is to identify the keywords given in the question. Now, what are the keywords? सबसे पहला keyword तो यही हो गया जी, Human Development Report. ठीक है, दूसरा कीवर्ड हो गया this 1997, which means this question is talking about HDR 1997, right? The third keyword will be what? Okay. Yeah, the third keyword is human development as the process of enlarging people's choices as well as raising the level of well-being achieved. मतलब the question is asking how human development is a process where it is not only focusing on enlarging people's income, people's choices, but also raising the level of well-being achieved, which means it is also focused on, my dear friends, the standard of living. It is also focused on the standard of living. ठीक है, अभी आपने क्वेश्चन समझ लिया। ठीक है, नाउ सबसे पहले हर एक आंसर के 3 पार्ट्स होते हैं, इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन। अब इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इन एवरी, एक्चुअली हर क्वेश्चन का जो इंट्रो पार्ट होता है उसमें आपको 2 चीजें लिखनी होती हैं, 2 में से एक या दोनों, या तो व्हाट या फिर व्हाई। ठीक है, या तो व्हाट या फिर व्हाई। नाउ हियर one keyword is what? Human development report. So you can simply write in the introduction what is human development report, and if you know why it was launched, what was the need of launching this, you can also write that. So its introduction is quite clear. Okay, then in body you are going to write the core of the question, right? Core kya hai? That how human development is a process of enlarging people's choice as well as level of well-being achieved. Now if you know the process of human development well, then you must be knowing that there are 4 components of human development. 4 components of human development. Equity of access, right? To equity of access to opportunities, empowerment,
एम्पावरमेंट, सस्टेनेबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। राइट, अब हम इसी 4 कंपोनेंट से ये इसको कनेक्ट करा देंगे कि भाई देखो ये 4 कंपोनेंट्स हैं जो कि इटसेल्फ ये बता रहे हैं दैट human development also, human development is not only about enlarging people's income, it is also about raising the standard of living। ठीक है, और लास्ट में कंक्लूजन में हम क्या करेंगे, जो आपने लिखा है अपने आंसर में उसी को समराइज करके लिख देंगे। ठीक है, दैट्स इट, दिस इज हाउ यू हैव टू अप्रोच एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन को आपको अप्रोच करना है तो उसका यही तरीका है। राइट, अब हम चलते हैं आंसर की तरफ। 1 सेकेंड, हैंग हो गया क्या भाई? ओके, ठीक है, चलिए अब आंसर को देखते हैं। ये आंसर एक स्टूडेंट ने लिखा है, ठीक है, लास्ट ईयर के टॉपर है, मैं नाम ले नहीं सकता, और बट ठीक है, आप उनका आंसर देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, व्हाट लिखना होता है, राइट। तो व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, यही तो लिखेंगे। सो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज एन एनुअल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफिस ऑफ यूएनडीपी। The first HDR was launched in 1990 by Pakistani economist Mehboob ul Haq and Indian Nobel laureate Amartya Sen। इन इट्स, पहले हमने बता दिया ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है। ठीक है, उसके बाद दूसरा कीवर्ड क्या था, 1997। हर एक कीवर्ड को छूना है भाई और बार बार अपने आंसर में लिखना है उसको। इन इट्स 1997 एडिशन, द रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट, द रिपोर्ट, यहाँ पे कोई वर्ड मिसिंग हो गया, द रिपोर्ट हैज सेड दैट द ह्यूमन डेवलपमेंट, the report has highlighted that human development is not only the process of enlarging people's choice as well as raising the level of well-being achieved। ठीक है, हमने बता दिया कि 1997 वाली रिपोर्ट में यही उसने बोला था, हमने क्वेश्चन से ही ले लिया। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा उसको और एक्सपैंड करने की कोशिश करें इंट्रोडक्शन को, अगर कर सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज इट्स परफेक्टली फाइन। राइट, हम पीछे गए, हम ये बताना चाह रहे हैं उसको कि व्हाई एक्चुअली देयर वाज अ नीड ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, why economic development was not sufficient, why सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ की बात आई थी, फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट आया और फिर लोगों को लगा कि नहीं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से तो नहीं हो पाएगा, देयर इज अ नीड ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एज वेल। तो अब हम यहाँ पे बता रहे हैं, या इस आंसर, ये जो आंसर है हमें बता रहा है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाज फोकस्ड एक्सक्लूसिवली ऑन एक्सपेंशन ऑफ ओनली वन चॉइस एंड दैट इज इनकम। राइट, but the concept of human development has gone far beyond the income and well-being, cover all human choices. Human development cover all human choices. It cover all the aspects like economic, social, cultural and political. And some aspects are education and literacy. Economic development में हम health की बात नहीं करते, but human development में we have to talk about the human health and also the human as a capital. Education and literacy, health, physical environment, freedom, like freedom of movement and speech, then gender related development, political and economic participation and decision making and political power। तो यहाँ पे हमने ये बता दिया, थोड़ा सा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट बता दिया, एक्चुअली हमने वाई बता दिया। देखो मैंने आपको बताया था आइदर यू शुड राइट व्हाट और यू शुड राइट वाई, राइट, बट हियर इन दिस आंसर द स्टूडेंट हैज एक्सप्लेन बोथ। व्हाट मतलब उसने पहले बता दिया ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या होता है, देन उसने बता दिया व्हाई देयर वाज अ नीड टू फोकस ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, अब हम आते हैं बॉडी के ऊपर। अब बॉडी क्या कह रही थी कि व्हाई ह्यूमन डेवलपमेंट leads to and how human development leads to better standard of living or better well-being। So there are 4 dimensions. There are 4 dimensions of human development which clearly indicate that concept of human development is not only focused on enhancing the income but also on the enhancing the standard of living। Now you must be wondering ये लाइन लिखने की क्या जरूरत थी। देखो अगर आप डायरेक्टली डायमेंशन पे पूछ जाओ, ठीक है, that following are the dimensions of human development, then what's going to happen, आपने लिखा तो सही लेकिन आपने जो कनेक्शन था वो टूट गया आपका। यहाँ से यहाँ तक आपका इंट्रोडक्शन था, यहाँ तक आपने सबसे पहले बताया ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, फिर आपने बताया क्यों चाहिए, फिर अब आप बता रहे हैं कि आपका जो क्वेश्चन आपने पूछा था साहब, उसका जो आंसर है ना उसमें इस चीज की जरूरत है, तो मैं बता रहा हूँ इसलिए। ठीक है, तो ये एक्चुअली कनेक्टर की तरह काम करते हैं इस तरीके के सेंटेंसेज और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आप डायरेक्टली यहाँ पे डायमेंशन पे कूद जाते हैं, 4 डायमेंशन लिखने लग जाते हैं, तो एग्जामिनर को समझ ही नहीं आता कि भाई आप कहना क्या चाह रहे हो। बट यहाँ पे आपने उसको बताया कि जो 4 डायमेंशन है ना, उससे हमें पता चलता है दैट ह्यूमन डेवलपमेंट इज नॉट फोकस्ड ओनली ऑन द इनकम बट ऑल्सो ऑन एनहांसिंग
दी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। उसके बाद 4 डायमेंशन की बात कर लो और हो गया आपका आंसर, राइट। तो क्या क्या है 4 डायमेंशन? इक्विटी और इक्विटेबल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज। अब इसके बारे में जो जो आपको पता है थोड़ा सा एक्सपैंड करके लिख सकते हो, डेवलपमेंट एक्सपैंड करके लिखना जरूर है। और देखो पॉइंटर्स में लिखे हुए आंसर, आंसर को पॉइंटर में लिखा हुआ है। If development is to enlarge people's choices, people must enjoy equitable access to opportunities. Equity and access to opportunities demands fundamental restructuring of power in many societies and changes along the following lines. And what are those lines? Change in distribution of productive assets, restructuring in the distribution of income, overhauling of the credit system. दूसरा डायमेंशन क्या है? सस्टेनेबिलिटी। Human development emphasizes on sustaining all forms of capital, that is physical, human, financial and environmental, so that future generations can have the same opportunities. ठीक है, so human development है ये। हम यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं कर रहे, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात नहीं कर रहे हैं कि आज कमाओ खाओ और छोड़ दो, आगे का छोड़ो। वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट। इट इज नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट द इनकम, इट इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द वेलबींग। एंड वेलबींग में हम सिर्फ अपनी वेलबींग के बारे में नहीं सोच सकते, वी विल आल्सो हैव टू टॉक अबाउट द वेलबींग ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस, एंड दैट्स व्हाई दिस डायमेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। This requires sustaining all forms of capital, okay. However, sustainability does not mean sustaining present levels of poverty and human deprivation, है ना। सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये नहीं है ना कि आप पॉवर्टी को सस्टेन करके रखेंगे, ऑफ कोर्स, ठीक है, या फिर ह्यूमन डेप्रिवेशन को, उससे तो आपको आगे बढ़ना ही है। If the present is miserable and unacceptable to the majority of the world's people, it must be changed before it is sustained. Sustain का मतलब ये थोड़ी है कि भाई आज हम गरीबी में जी रहे हैं तो अपने फ्यूचर जनरेशन को भी गरीबी में ही, हमारी फ्यूचर जनरेशन को भी गरीबी में ही जीना पड़ेगा, ये थोड़ी होता है सस्टेनेबिलिटी का मतलब। Then productivity, of course, the third dimension. Human development believes in investing in people so that they can achieve their maximum potential. Yeah. People are not seen merely as human resources, that is, as means for better economic efficiency. People are seen as the ultimate ends of the development process. We are the one जिन्होंने इस दुनिया को ऐसा बनाया, बनाने वाले ने धरती बनाई, हमें जान दी, हमें दिमाग दिया, फिर हमने इन्वेंशंस करके, हमारे ह्यूमन ब्रेन ने इन्वेंशंस करके ऐसा करा। सो वी एज जो ह्यूमन कैपिटल होता है, दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज केटरिंग टू दैट पार्ट is very very important if we talk about the human development. And last, it empowers the human development, empowers the individuals. It envisages full empowerment of the people. It means that people are in a position to exercise choices of their own free will. मेरी मर्जी है कि मैं क्या खाना चाहता हूँ। अगर प्रधानमंत्री के कहने पे मैं खाना खाऊंगा तो what kind of development is this? अगर प्रधानमंत्री के कहने पे या फिर किसी और मंत्री के कहने पे या फिर अपने कंट्री के लीडर के कहने पे अगर मुझे अपना काम करना पड़ेगा, so what kind of freedom is this? What kind of development is this? Right? So human development talks about a very major aspect of life, that is empowerment. It gives you free will to do anything that you want. अब anything का मतलब ऐसा नहीं है ना कि आप चाकू उठा के किसी का खून कर दोगे. Of course, that anything has certain boundaries. Anything का मतलब ये थोड़ी है कि मेरा मन कर रहा है कि आज मैं किसी को चाकू मार दूं जाके, तो वो मेरा मन था, दैट इज एम्पावरमेंट। नो, दैट इज नॉट एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट के नाम पे आप क्राइम नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब देखो इन चारों पॉइंट से ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि द ह्यूमन डेवलपमेंट इज नॉट ओनली फोकसिंग ऑन एनहांसिंग इनकम बट ऑल्सो फोकसिंग ऑन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब लास्ट में क्या करना है? कंक्लूजन देना है। कंक्लूजन में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है, ठीक है। देखो यार, कंक्लूजन सबसे आसान है, जो अभी तक आपने पूरा लिखा ना उसी को छोटा करके लिखना है बस, ठीक है। देखो स्टूडेंट ने क्या लिखा, there are various human choices that extend far beyond economic well-being, ठीक है। knowledge, health, a clean physical environment, political freedom and simple pleasures of life are not dependent on income. Hence it can be concluded that human development is a process of widening people's choices and raising the levels of well-being achieved. देखो वही जो ऊपर क्वेश्चन आंसर में लिखा था बॉडी में, उसी को हमने दूसरे शब्दों में लिख दिया, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू राइट, you can write a good conclusion, ठीक है। I hope guys approach of I hope that now you know that how you should approach a particular descriptive question. If you have any doubts now, you can please ask me, and in the meantime मैं आपको बता दूं कि माधव सर जो है एवरी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को शाम को 5 बजे
फाइनेंस करंट अफेयर्स की बहुत ही बेहतरीन क्लास लेते हैं, वेयर ही कवर्स ऑल द आरबीआई सर्कुलर्स, सेबी सर्कुलर्स, फाइनेंस रिलेटेड न्यूज, एवरीथिंग। और ये कुछ सेल वेल चलती है इसमें। अभी जो फाउंडेशन बैच है, एक्चुअली ये सब्सक्रिप्शन है, फाउंडेशन बैच प्लस अभी जो हमने एक बूस्टर बैच लॉन्च किया है, दोनों का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा आपको। एंड इफ यू वांट टू एनरोल इन इट, यू कैन यूज द कूपन कोड मनीष। ठीक है, चलिए, नाउ इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी, अदरवाइज गिव मी अ थम्स अप। यार एमआर, आई थिंक आई हैव क्रिएटेड अ 3 month स्टडी प्लान, बट ठीक है, प्रकाश सर ने क्रिएट किया था, बट इफ यू वांट इट फ्रॉम मी आई विल डू द सेम, डोंट वरी। नाउ प्लीज गिव मी अ थम्स अप, एवरीथिंग इज, इफ एवरीथिंग इज फाइन, और इफ यू हैव एनी डाउट्स यू आर मोस्ट वेलकम टू प्लीज आस्क। और कुछ जगहों पे देखो अननेसेसरी आपको पीआईबी की न्यूज पढ़ाई जाएंगी, मत पढ़ना। मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि अच्छा एक्सपीरियंस है और बहुत सपोर्ट किया है मैंने लोगों को, तो आप लोग आइए, पढ़िए और लोगों को बताइए। ठीक है, कैन वी इंक्लूड डिफरेंट डायमेंशंस अदर देन दीज फोर? देयर आर 4 dimensions ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, बट yes, if you want to include any, then you can write after the fourth dimension that along with the dimensions stipulated in the human development, there are certain more dimensions which are being catered by the concept of human development. ठीक है, फलक सफक, आरबीआई रिपोर्ट सर्कुलर, ये सब माधव सर करा रहे हैं फाइनेंस करंट अफेयर्स की क्लास में, दैट इज being conducted every Tuesday, Thursday and Saturday at 5 p.m. Thank you, Mohammed Sabuddin. Daily revision of PDF that I am providing on Telegram is more than enough, Shivani. And मैं फिर से बता दूं भाई, किसी को अगर टेलीग्राम चैनल नहीं मिल रहा है मेरा, तो पहले तो सर्च करो PIB बाय मनीष सर। ठीक है, नहीं मिलता है तो DM करो एट मैशी मनीष। 3,500 लोग वहां पे बैठे, उनको मिल रहा है, कुछ लोगों को नहीं मिल पाता, ठीक है, टेक्निकल इश्यूज की वजह से। Yes, Shalini, you can include physical development and socio-economic development. Who will be teaching descriptive? Everyone is teaching descriptive. Prakash sir for ESI, Madhav sir finance management के लिए, महेश सर। तो जो टीचर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं सब्जेक्ट, वो आपको डिस्क्रिप्टिव भी पढ़ाएंगे इन द कोर्स। ठीक है, चलिए, आई थिंक देयर आर नो डाउट्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास ऑन वेडनेसडे। आई होप कुछ न्यूज हो अच्छी, तो पढ़ने में मजा आए। ठीक है, गुड बाय टिल देन, कीप स्टडिंग एंड कीप स्टडिंग हार्ड, और पढ़ लो भाई, पढ़ लो अच्छे से, पढ़ लो और पढ़ लो और पढ़ लो। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।